I think basics we have discussed about the hypothesis testing. We'll discuss more on how actually they are processed. If we see the syllabus and you can just see how the just next unit क्या है? We were talking about the confidence interval. Any question from last class? Excuse me, sir. तो ये ऑड रेशियो कॉन्फिडेंस इंटरवल बता दीजिए एक बार क्या होता है? अभी कर रहे हैं, वही कर रहे हैं. The confidence interval or significance level of significance that you understood.
सर वॉइस नहीं है। Yes, so confidence interval, whenever we have the one group, univariate means one variable only, and we have to process and to have some meaningful conclusions or information. Go for confidence interval. Confidence interval, I have mentioned you, this is two term. One is the interval, another is the confidence. Confidence comes from the level of significance. Interval is the gap, you save it. Anyone can tell the formula for confidence interval? Yes, बहुत important है ये कि जो सैंपल साइज आप एक ग्रुप का सैंपल साइज निकालते हो, सपोज आप कोई टेस्ट रन नहीं कर रहे बट यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द सैंपल साइज, आपके बहुत हेल्प है। ये जो आपका फॉर्मूला है मीन, मीन को हम लोग एक्स बार भी लिखते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे जेड लिख लो या टी लिख लो, टी की वैल्यू लिख सकते हैं एस ई। इसके लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मीन प्लस माइनस जेड एस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एक क्वेश्चन इस पे आता ही है, आप कोई भी एग्जाम देखेंगे you'll find out one question. एस ई क्या है and how to calculate? एस ई is standard error and it can be calculated if you divide a standard deviation with square root n. Therefrom you get a standard deviation is the square root of variance. Okay, variance काला हमने उसका स्क्वायर रूट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया, उसमें रूट एन से डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड एरर आया। आपका ये टी ये वैल्यू है, जेड वैल्यू है, दिस इज द टेबलेटेड वन, this will be given, this will be tabulated value, it will be given, or you can find out from the table. People know how to see the table, टी टेबल और जेड टेबल, आपको आइडिया है कैसे निकालते हैं इसको? हम्म। अब इसमें एक टर्म है आपका मीन, मीन मीन निकालने में कोई डिफिकल्टी नो, मीन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं।
फॉर्मूला क्या है मीन का? सिग्मा एक्स अपॉन एन। वेरी गुड, सिग्मा एक्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल में कौन सा टर्म है जिसके बारे में आपको पता है? मैंने आपको बताया दिस पैरामीटर इज इम्पोर्टेंट वन, और नाउ करेंटली व्हेन वी आर गिविंग द रेंज, वो रेंज देते हैं या लोअर लिमिट किसी भी चीज का, लोअर लिमिट क्या होगा और हायर लिमिट क्या होगा। तो हम बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ही देते हैं। We have to fix the level of significance. होता है mostly these levels are put on 95%, 99%, or sometimes you'll get 90%. ठीक है, most frequently used is 95%. इसका मतलब ये है कि कोई भी पॉपुलेशन है जो आपने रेंज फिक्स किया है, 95 पीपल जो है इसमें आएंगे ही। अगर कोई पर्सन नॉर्मल है, इज नॉट हैविंग एनी डिसीज, 70 से लेके 110 शुगर है इसका, ग्राम पर डेसीलीटर। हम्म, ये जो शुगर लेवल है आपका, 95% जो पॉपुलेशन है इस रेंज में होगी नॉर्मल। कुछ लोग नॉर्मल भी होते हैं, देन ऑल्सो उनका शुगर लेवल हाई या कम हो सकता है। बट अगर हम लोग अ, एक रेंज फिक्स करते हैं तो 99 हो 95 हो, डिपेंड करता है कि वो पैरामीटर कितना ज्यादा जरूरी है। कितना ज्यादा जरूरी मतलब कितना ज्यादा वो रिलीवेंट। कुछ इनडायरेक्ट पैरामीटर है, उसमें उतना डिफरेंस ना भी मिले तो चल जाता है, बट डायरेक्ट और जो बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको हम लोग पिक करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि समटाइम्स यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस इंटरवल एट 99% significance. That depends, right? Now, tell me one thing that एक होता है आपका मेडिकल रिलेवेंस। रिलेवेंस एक टर्म है आपके इसमें, एक है स्टैटिस्टिकल रिलेवेंस। इसका मीनिंग कौन बताया? यस, रिस्पॉन्ड करिए। व्हाट इज मेडिकल रिलेवेंस? सपोज करो यू आर डूइंग ए रिसर्च, राइट, एंड you find out that this particular result is not statistically significant। आपने पता कर लिया कि statistically significant नहीं है, statistically तो कोई रोल नहीं है उसका, statistically not significant, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, because we will say that this difference is by chance। एक ये लिमिटेशन है जो मैं बताने की कोशिश कर, sometimes statistically not relevance may have the medical relevance, हाँ।
नाउ टेक वन एग्जांपल, शुगर लेवल ही ले लेते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ 10 individuals ठीक है, 70, 80, 30, 20, 100, 90, 80, मान लीजिए इधर 70, बस ही लेते हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करिए और कॉन्फिडेंस इंटरवल। फ्रॉम द गिवन डेटा से आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगता है क्वेश्चन में और क्या दिया होना चाहिए? देन ओनली यू कैन फाइंड आउट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर दिया होगा तो यू कैन इजिली फाइंड आउट। नाउ आपको मैंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया T25.96। ठीक है, नाउ यू कैन प्रोसेस। आप कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालिए। I'll make you learn how to find out the sample size and what is the relevance of confidence interval. First thing is easy. How to process? Again, xi. Then we need to find out x bar. Then we have to find out x minus x bar. Then just square. ठीक है, यही चाहिए अल्टीमेटली हर एक क्वेश्चन में। आप ये देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल ट्राई टू डू ओनली दिस थिंग। ठीक है, हम यही कर रहे हैं। Only thing is that we have to write answer in a different answer होगा differently place करना है। इसी से हम आपको सैंपल साइज अभी कंसेप्ट देंगे। जस्ट कैलकुलेट करेंगे, आप डेटा पुट करिए। डेटा लिखा है? I want to see some answers. Can use this particular data. सर Yes, मीन सर 95.7 आया सर। 95 चल ले लो, that's not issue because we have the calculator. We can do that, no issue there. 90 point 95.7 सर। you use 95.7. Okay, we can use it because we have the calculator, so you just use this.
और सम ऑफ स्क्वायर और इसको एक्सेल से भी बहुत फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं। This would be 70. यहाँ पे सम कर देंगे। आपका सम इतनी आया है। अगर हम एवरेज ऐसे निकालें, हम्म, 70, 80, 130, 120, 100, 90, 80, 70, 60, 80, 70. Average is coming 86.36. यस सर। 86.36 है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, नहीं आया है। ओके ओके ओके, सो हमने क्या करा, 950 डिवाइडेड बाई 11 कर दिया। ठीक है, देन आई नीड टू गिव 80
6.33। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट पुट द फॉर्मूला। इट सेज दैट A1 माइनस, यहाँ पे क्या करना है, हमने 86.36 वैल्यू रख देना है, 36.36। और आगे भी रखना चाहता हूँ, यू हैव द फ्रीडम टू पुट दैट 36, right? This is coming. So what we need to do again, just scroll it out, you will get that information. Or then what we need to do, this is not m, okay, this is what, x minus m, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, we need to square it. What we need to do, we need to square it. So what we need to do, multiply this with this only, no? You'll get answer square. If you want sum, just copy this value, paste here, you'll get sum of this. You can cross check whether it is right or wrong. So just see the selection. Okay. ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर इतना आया, आप लोगों को आया किसी का? Then degree of freedom is 10. So variance, what will be the variance? Sum of square divided by degree of freedom. You got this variance. Now you have to find out the square root. So how to put that square root? Write SQRT, the square root, and find out the value. This is 485.5. Okay. So I give this command directly. I'll say find out the standard deviation. Let's see what we will get. See, directly you will get standard deviation. हमने ये calculate किया, otherwise Excel itself you can easily get that. I'll try to get confidence interval as such. We have the formula. Just find out the statistical and see whether we have the confidence interval here. Is asking standard deviation. So we have it. Is asking the
size is 11. Okay, here we have to put the value. Means we have to put what? This value of t or z, right? So what we got till now, we got the standard deviation. Now how to got the standard error? Standard deviation Upon the divided root n. by root. Yes, very good. As कितना रखेंगे 11, right? So confidence interval, you should have the mean. Okay, we have the mean. So I can highlight the mean. Have the mean. Then we should have the standard error. We have the standard. Now formula is mean plus minus t s e और z s e, right? तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1.96 जो मैंने आपको दिया है. बहुत लोगों ने इसकी वैल्यू देखनी होगी कैसे टी वैल्यू चेक करते हैं. You can just Google it, put on yes T table. You will get T table. You want to see it. One more option we have. So just through Google, you can just do it. Find out the T table. I'll show you one more processing. By just putting the software. You copy this data and we can put directly into the software.
You people try to download the sigma plot so that when we do this processing, you can easily follow it. What we need to just put your data, and now whatever you want to find out, you can find out very easily. Okay, descriptive statistic. Done. Where is the data? Okay, tell that data is here. Finish it. Right. So here you can see that kurtosis, skewness, then the probability distribution. Sum kitna tha? What was the sum? Sum of squares kitna tha? Then what was the mean? What was the standard deviation? What was the error? What was the confidence interval? What was the minimum value, maximum range, median? These are the, what are these? 25% and 75%. These are the quartiles. You can, one command only, you can each and everything. You have options also, you can change what exactly you want. So here you want to describe, you want to compare, whatever you want to do, we have the option for that. So go for the data and tell that. Now, we'll talk about the option you can here tell what exactly you want to calculate, right? Then you can run. You can change here. Confidence interval we are finding at 95% interval, right? So what was the confidence interval? We can just see it and then we can interpret what the report is that confidence interval is 14.805 of mean. That means mean कितना है उसमें you can add this value and you can subtract that value. Now, what I was trying to tell you can calculate this. The important thing is that using the concept of confidence interval, you can find out the sample size. Here, formula is Ci equals to mean plus minus. I will write Z, SE or TSE also. Right? So it means that the highest value क्या होगी mean plus ZSE. और क्या होगी mean minus Z. If we say range और gap, हाई और लो के बीच का gap क्या होगा सब्सट्रैक्ट करना होगा, राइट? ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 2Z. ठीक है. सो डी, इसको डी लिखते हैं मैनी टाइम्स एंड विल गेट 2ZSE. दिस इज गैप. नाउ D equals to 2Z. ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. And if you put this formula, you can find out n from this formula. With this formula, you can find out n. This is square it, you will get D square or Z square. A standard deviation is square divided by n. The formula of n here and D will be this. We have the n equals to Z square. Standard deviation is square divided by. This is the gap. हमने बोला था आपको जो आपको सैंपल साइज निकालना है तो आपको पहले ही से फिक्स करना पड़ेगा अल्फा या फिर सिग्निफिकेंस लेवल, दूसरा गैप या डिफरेंस, तीसरा आपको डिस्पर्सन स्प्रेड का आइडिया होता है कि आपको पॉपुलेशन का डिस्पर्सन क्या है, स्प्रेड क्या है.
So that way you can find out the sample size as well. Confidence interval is very important. Finding the range, not absolute trend, but lower and high limit. So whenever you write sugar average, and here the value will be written 110. That could be confidence interval 95 or confidence interval 90. So I will conclude here and we'll connect tomorrow. Thank you. I will train you the software as well in upcoming classes. Thank you. Excuse me, sir. Yes. तो जो आपने क्लास इंटरवल जब हमने सारी वैल्यूज पुट करी, जो मीन आया था, टी वैल्यू आपने बताई, स्टैंडर्ड एरर हमने निकाला, तो सर जो आंसर होगा वो मीन प्लस माइनस के फॉर्म में, जैसे सर मीन 86 था और टी इंटू ऐसे करके सर 13 आया, तो 86 प्लस माइनस 13 होगा, या फिर सर उसको भी रेंज के फॉर्म में लिखना, आंसर लिखा जाएगा, जैसे नहीं कि नहीं, इसको ऐसे प्लस लिखा जाए। वो आपका जो फॉर्मूला होगा, मीन लिखोगे आप और लोअर वैल्यू प्लस माइनस। कॉमा हायर अच्छा वैल्यू। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। दैट दैट तो ठीक सर है। मीन की थैंक यू वैल्यू जो भी होगी वो लिख देंगे। सर। थैंक यू सर। यहाँ पे एक बार माइनस करके एक बार सम करके ये पुट देगा। 75 टू ठीक 100 आया था। ठीक है सर, है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। सी यू टुमारो। थैंक यू सर।